कुछ आदमी लोग ऑनलाइन में ये सब ट्रेडिंग ऐप में फंस के शेयर मार्केट का नाम बदनाम करता है, बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, ये खेलना नहीं चाहिए, शेयर मार्केट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट वो लोग इन्वेस्टिंग के बारे में जानता ही नहीं है, वो इन्वेस्टिंग के बारे में उल्टा पल्टा बोल देता है। जैसे चाकू को फल सब्जी चिकन मटन ये सब काटने के लिए यूज़ करता है, बट वो लोग कुछ लोग मिसयूज़ भी करता है। जैसे कुछ लोग किसी लोग आदमी को मर्डर कर दिया चाकू से, या हाथ काट लिया, पैर काट लिया, इसके चक्कर में चाकू का बदनाम तो आप नहीं करोगे ना। सेम ऐसा ही आपको प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं रहना, उसको चीज़ में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, टीवी में या किसी में कुछ उल्टा पल्टा ऐड देख लिया, जैसे टीवी में दिखाता है सलमान खान बस में टकराया फिर भी कुछ नहीं हुआ, बस टूट गया, बस तहस नहस हो गया, ट्रेन को पकड़ लेता है, गदर मूवी इंजन के साथ खींच के जोड़ देता है। तो ये सब देख के मोटिवेट नहीं होना, रियली पॉसिबल है कि नहीं वो भी सोचना है। और फाइनली आता हूँ शेयर मार्केट क्या हलाल है या हराम है, इसके बारे में जानने के लिए अगर इस्लाम में देखें, आपको लास्ट में एक वीडियो भी शेयर करता हूँ जिसमें बोला गया है हाँ शेयर मार्केट अगर पर शेयर देखा जाए तो ये हलाल है। डॉक्टर जाकिर नायक का एक वीडियो आपको अभी शेयर करके थोड़ा दिखाता हूँ। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट प्रिंसिपल है प्रॉफिट एंड शेयर लॉस, प्रॉफिट ऑफ लॉस दोनों शेयर करते हैं आपके साथ शेयर मार्केट में। बट जो रिबा सूद जो हमारा इस्लाम में ये हराम है। तो जो सूद के रिलेटेड जो कारोबार होता है, जैसे बैंक हो गया और कुछ ये सब अलाउ नहीं है। बैंक में जो इंटरेस्ट देता है ना वो भी हमारा अलाउ नहीं है, बट हम लोग उसी में ज़्यादा भरोसा करता है, बट शेयर मार्केट में भरोसा नहीं करता है क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं है ना उसके बारे में थोड़ा भी। शेयर मार्केट में मेन एक कंपनी के ऊपर फोकस करता है, कंपनी खरीदना चाहिए। उसमें से कुछ कंपनी अलाउ नहीं है, जिसमें हमारा इस्लाम अलाउ नहीं करता है, वो सब कंपनी अलाउ नहीं है। जैसा फिल्म इंडस्ट्री हो गया, डे बाई डे ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, जैसा वो जुआ खेलना जैसा। एक ही दिन में कंपनी में थोड़ी आप एक दिन के लिए शेयर होल्डर बन सकते हो, एक दिन 2 दिन के लिए तो जुआ खेला हो गया ना। तो जुआ खेला हमारा इस्लाम में अलाउ नहीं है। कुकिंग, ड्रग, अल्कोहल ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये सब छोड़ के बाकी जो हलाल कंपनी है उस कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करोगे तो वो सब अलाउ है। आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ तो with FNO market, future and option. I don't know how many people understand the stock market here. With a very intellectual mathematics and very intellectual playing the game, I am always secure and always in profit after the end of the month. It's a mathematic game which people don't understand. Is it okay to go ahead with such income? I'm suffering from this last 3 years. I'm earning money. I can earn money whatever level I want to earn. But I don't want to earn anything wrong. If it is wrong, I will leave that forever and I will go into teaching profession forever. Alhamdulillah. That's a very good question, and I appreciate that after reading the Bhagavad Gita, Ramayana and the Hindu scriptures, he read the Quran twice and he agrees with it. He has a brother-in-law who's a Muslim and he's very strong in maths, and even I happen to be strong in maths. And in school days, right from standard 1 to standard 9, 10, always back the price. Without saying, it's a mind-boggling memory. I've never seen a person like you. And if God grace, I will be at your place forever. If the God, अगर ईश्वर की मर्जी हुई, अल्लाह की मर्जी हुई, तो आपका शिष्य बनूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर. Inshallah, inshallah. Inshallah. First, I'll come to the question and then, inshallah, I'll reply to his last comment. As far as question is concerned, that you are in the stock market about futures and options, etc. And you are so good in maths and analyzing that always at the end of the month you make a profit. So question is that, is this earning halal or haram? As far as the stock market is concerned, stock per se is not haram, per se. As long as the stocks you deal in, it is according to the guidelines of Islam. What is haram in Islam is riba, it's interest. There are many verses in the Quran, no less than 8 different places. Almighty God says in the Quran that riba is haram. In Surah Imran, chapter number 3, verse number 130. In Surah Nisa, chapter 4, verse 161. In Surah Baqarah, chapter 2, verse number 275 thrice. In Surah Baqarah, chapter 2, verse 276. As well as in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 278. It says that give up your demands of riba, of interest, of usury.
And those who do not give up the demands of riba and usury, verse number 279, Allah says, take notice of Allah from Allah and His Rasul, Allah and His Messenger. So dealing in interest is haram. But share market is somewhat following the principles of Islam of profit and loss sharing. Share per se, instead of taking a loan from the bank, we make partners. Because the banking system makes a rich person more rich, poor person more poor. It encourages things evil in society. Like in 80s, the banks fund gambling dens, alcohol bars. In Islamic system is different. Islamic banking is different. So, Islam encourages profit and loss sharing. In the stock market, what do? That you buy a share. So you become a partner in that company. Whether 1%, 10%, 0.1%, 0.01%. So being partner in profit and loss sharing is encouraged in Islam. So if you're dealing in stock market and shares, as long as it is within the purview of the Islamic Sharia, as long as you do not buy shares of a company which deals in alcohol, company which deals in interest, financial companies, whether it be banks, whether financial instrument companies, company which deals in media obscenity, pornography. So all the evils of society, if the company you invest in is not investing in the evil of society, alcoholism or drugs or drug pharmaceutical companies allowed, drugs means cocaine and brown sugar, or dealing with obscenity, it may be film industry. So if you buy shares of these companies, it's haram. Secondly, if you involve in speculation, that is gambling, you've been in the stock market, people buy now, after 2 minutes again they sell because of prior information or because of, so gambling is prohibited in Islam. So if your stock market is good, you want to invest in it, you want to stay for good, be a partner, and even I'm involved in stock market. And so you're not replying to the right point I'm asking. It is futures and options. It is put and call. I'm coming to it. You can just pay 10 rupees and buy stocks for 100 rupees and you keep it for years and years together. I'm coming to it. Yes, sir. I like giving a holistic reply rather than... Okay. Thanks a lot, sir. Sorry for disturbing. Now coming to the futures option, that you buy part of the shares and you deal with it, etc. Talking about futures, if you pay part and have it with you, I know you can sell, then you can have security on that. Then there's another person with the derivatives, which can even, I know about this. I may not be an expert like you, but I mean this is... So dealing in futures, it's not permitted. It's not. Margin trading in certain things like real estate, you buy 10% of that and then it increases because you have to make timely payment. If you buy a flat, suppose the payment time is 2 years, you pay 10% now, 20% later, the rates go up, you sell, that's fine. But in shares it doesn't work like that. In futures it doesn't work like that. So because you don't possess it in your hands, just take part of the money and then someone else backs you up that if it goes down, then they hedge it. Hedging. They hedge it. So all these things are not permitted in Islam. But pure stock, as long as the thing which you deal in, if it is Islamic, it's allowed. And you ask me the question, that all these things that you get a large money income, if it's not allowed, you will like it. See, the money that you earn, as you said, if it's not permitted, you stop it. So what we are interested in peace in this world and the Akhirah. The peace in the next world is a longer peace. So if you are earning the halal, inshallah, you will get good in this world as well as... फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मोटिव था कि मेरा कुछ दोस्त, मेरा गांव का कुछ लड़का लोग भी, जो लोग यूट्यूब या फिर किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में फंस के वो लोग उसमें ट्रेड करके 10-20 हज़ार रुपये गवा चुका है। ऐसे बहुत सारा मैंने देखा है, सुना है। इसलिए वो लोगों को थोड़ा समझाने के लिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये दोनों का बीच का फ़र्क क्या है और ये दोनों में से कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, कौन सा करना नहीं चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए तो आप लोगों को समझ में आएगा।